Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 1, citizenship. We have completed this unit and today I will give you a complete review of citizenship. We will revise all the objectives that we have covered and I will also give you an assessment to evaluate you that what you have learned from this unit. So my dear students, first quickly have a look at the student learning outcomes which we have covered. Alhamdulillah, they are given on page number 5. So these are for the parents and the teachers to understand that by the end of the unit, all the students are now able to convey, understand and talk about all these objectives. So my dear students, now let's quickly refresh your knowledge because we have learned a lot of things from this unit. So let's quickly refresh some things or few concepts about citizenship. So quickly tell me, how are citizenship and community interlinked? Okay, my dear students, quickly first think about what is citizenship. एक मुल्क के शहरी को या एक मुल्क की शहरियत को हम citizenship कहते हैं. And then what is community? Community is basically same type of people, a group of people living together is called a community. ठीक है? अब कैसे ये दोनों चीजें जो हैं वो interlinked हैं? Yes, because when you are citizen of any country, any state, then you connect to different type of people and maybe you have similar thoughts, similar religions, and that's how you construct a community, and that's how these two are interlinked. Then comes tell some rights of citizen of a country. Now you have to tell me that what are the rights of a citizen of a country. So एक मुल्क के शहरी के some basic rights, 2 or 3. Safety, number 1. Number 2, good transportation system, availability of clean water, clean roads, and yes, very good, availability of food also. So these are some basic rights of the citizens. Next is, what is the difference between rights and responsibilities? Rights में और responsibilities में क्या फर्क होता है? Rights are which you as a person must have, because your which rights do you have is somebody else's duty, and the responsibility is basically your duty जो आपको perform करनी है. Rights हैं आपके हकूक जो आपको मिलने चाहिए, और responsibilities हैं जो कि आपने खुद perform करनी है. ठीक है? So this is the difference between rights and responsibilities. Rights that you must have or must get, और responsibilities हैं which you must perform, जो आपने खुद से करनी है वो आपकी responsibilities हैं. So my dear students, next is, do you have friend who belongs to other social, cultural or religious background? How do you behave with them? So my dear students, अगर आपका कोई friend है जो कि किसी different culture से है, if you are Punjabi and he is Pathan, and if you are Pathan, he is Balochi, or if he is from some other religion, वो किसी दूसरे religion से ताल्लुक रखता है, तो क्या आपका behavior उसके साथ different हो जाएगा? No, our behavior must always be extremely good. हमें हमेशा बहुत अच्छे behavior के साथ हर इंसान के साथ पेश आना चाहिए. Next on your screen, you can see how accepting diverse groups can make our society a better place. अगर आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो कैसे जो है आपके रहने की जगह जो है वो एक बेहतर जगह बन सकती है. When you accept diversity, you have tolerance and acceptance in yourself, and that's how you get good ideas. इस तरीके से वैरायटी आपको मिलती है, इस तरीके से आपके अपने अंदर बर्दाश्त पैदा होती है, टॉलरेंस पैदा होती है, आप दूसरों की इज्जत करना सीखते हैं, एंड दैट्स हाउ आपकी जो सोसाइटी है वो रहने में एक बहुत बेहतर जगह बन जाती है. सो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Next is, if you have to face
the inappropriate behavior of your younger sibling, what will you do in this situation? So my dear students, अगर आपके छोटे बहन या भाई का आपके साथ बिहेवियर जो है वो खराब हो जाए तो आप उसके साथ कैसे पेश आएंगे? पिटाई करेंगे, गुस्सा करेंगे, एब्यूज करेंगे, या आप उसको टॉलरेट करके ये बताएंगे कि आपको अपना बिहेवियर ठीक करना चाहिए? यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप शाउट करेंगे, एब्यूसिव हो जाएंगे और फिर आप उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहेंगे तो कभी भी कोई शख्स इस तरीके से नहीं सीखेगा. इंस्टेड अगर आप कोशिश करेंगे कि आप उसके साथ अच्छे बिहेवियर से पेश आएँ, अपना बिहेवियर आप जो है वो टॉलरेंस आपके अंदर पैदा हो जाएगी, तो दैट्स हाउ आप उसको जो है कोई एक अच्छी बात जो है वो सिखा सकते हैं. सो योर बिहेवियर मस्ट ऑलवेज बी good and you must always be tolerant, no matter how is the behavior of the other person. Next is, what kind of attitude create peace? Tolerance and acceptance create peace. ठीक है, अगर आपके अंदर बर्दाश्त होगी, अगर आप दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे, इसी तरीके से आप अपनी सोसाइटी में अमन, सकून और पीस जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं. So my dear students, from here we will move towards the next question. Do you know what about common etiquettes? अच्छा, क्या आपको common etiquettes के बारे में पता है, यानी कि good manners के बारे में? So tell me a few. Yes, always say assalamu alaikum. Yes, talk nicely, and do not disturb your neighbors. So these are some common etiquettes and manners. Okay, from here we will move forward towards the Islamic perspectives, which we have covered throughout the lesson, throughout the unit. So my dear students, verily we have honored the children of Adam. Verily the most honored of you in the sight of Allah is the most righteous of you. The most beloved of Allah's slaves to Allah are those with the best manners. A good word is charity. So my dear students, here you can see some hadith and verses on your screen जिसमें हमने ये पढ़ा. मैं आपको सबका जो है वो वन बाय वन बताती जाती हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की औलाद को जो है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है. इसके अलावा अल्लाह ताला की नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब बंदा वो है, या सबसे ज़्यादा इज़्ज़त उसकी है जो कि सच बात करता है हमेशा. नेक्स्ट इज़, अल्लाह ताला की नज़र में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके मैनर्स जो हैं वो सबसे बेहतर हैं, और हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात जो है इट इज़ इक्वलेंट टू चैरिटी करना, यानी कि सदका देने के बराबर है. So my dear students, next is the messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, verily after me there will be conflicts or affairs, so if you are able to end them in peace, then do so. So नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई भी झगड़ा होता है तो अगर आप उसको ख़त्म कर सकते हैं पीसफुली, तो हमें उनको पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए. Narrated by Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, the Prophet said, the most hated person in the sight of Allah is the most quarrelsome person. So Allah Ta'ala के नज़दीक सबसे ऐसा बंदा जिसको खुद अल्लाह ताला पसंद नहीं करते, वो ऐसा शख्स है जो झगड़ा करता है, जो झगड़े को बढ़ाता है. तो हमें हमेशा झगड़ों को ख़त्म करना चाहिए, end them peacefully. So my dear students, we started our unit with page number 6, जहाँ से हमने citizenship को पढ़ना शुरू किया था. हमने different types of citizenships पढ़े थे. हमने पढ़ा था कि एक मुल्क के शहरी को हम citizen कहते हैं. Then there are global citizens. Being human beings, we all are global citizens, क्योंकि हम सब connected हैं, हम सब इंसान हैं. And here you can see on your screen, हमने discuss किया था कि every person in this world is a global citizen based on humanity. The status of being a citizen is known as citizenship. A citizen is a person who is a member of a country under the law of that country. ठीक है, तो ये हो गया कि आप कैसे एक मुल्क के शहरी बनते हैं. On the basis of humanity, we all are global citizens. On page number 7, we discussed about digital citizen.
So who is a digital citizen? A person who uses information technology is known as a digital citizen. आप सब जो है इंटरनेट को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, एंड इफ यू आर यूजिंग इट इन अ बेटर वे, so that's how you become a digital citizen. And then we also discussed about human rights, that every human being has some basic rights such as food, health, shelter, education, protection, etc. These are known as fundamental human rights. ठीक है, जो basic human rights हैं जो हर इंसान को मिलने चाहिए, these are called fundamental human rights. और उनमें क्या है? खाना है, सेहत की सहूलियात हैं, इसके अलावा घर हर शख्स के पास होना चाहिए, साफ पानी हर इंसान के पास होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए. So these are basic fundamental human rights. Then next on page number 9, we discussed about rights and responsibilities. So rights of one person is the responsibility of the other. We should be aware of our rights. हमें अपने हकूक का भी पता होना चाहिए. And we must also be aware of our responsibilities. We should fulfill our responsibilities in order to save our society and its people. Serve our society and its people. Serve. ठीक है, अगर हम अपनी सोसाइटी को और यहाँ के लोगों को बेनिफिट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम सब इंसान जो हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को केयरफुली जो है उनको पूरा करें. So my dear students, next on page number 10, we discussed about diversity. So the difference among people is known as diversity. लोगों के अंदर जो difference होता है culturally, religiously, age-wise, gender-wise, this difference is known as diversity. And then we discussed about cultural diversity. In our society, people are culturally, racially, religiously, age and gender-wise diverse. ठीक है, हम सब जो हैं वो culturally different हैं, age-wise हम diverse हैं, gender-wise diverse हैं. इसके अलावा हम लोग जो हैं हमारी race different है. For example, we have different hair color, skin color, different heights हैं हमारी. So that's how we are. हमारे अंदर रेस डाइवर्सिटी भी है. सो वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट टॉलरेंस. बाय एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी वी कैन मेक आवर सोसाइटी बेटर प्लेस टू लिव. ठीक है, अगर आप कैसे डाइवर्सिटी को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपनी सोसाइटी को एक बेहतर जगह बना लेंगे. एक्सेप्टिंग अदर्स हेल्प सोसाइटीज़ ग्रो. अगर आप दूसरों की राय को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट्स हाउ यू कैन मेक योर सोसाइटी अ बेटर प्लेस. टॉलरेंस इज एक्सेप्टिंग और रिस्पेक्टिंग द डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ अदर्स. ठीक है, एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी जो है आपकी सोसाइटी को बेहतर बनाती है, और टॉलरेंस जो है वो बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करना है, दूसरों की राय को एक्सेप्ट करना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट. अगर किसी का बिहेवियर आपके साथ बुरा है, you do not like it, still your behavior should be good to them, you should be tolerant to them. By showing tolerance we can make our society peaceful and harmonious. ठीक है, हम अपनी सोसाइटी को बेटर प्लेस बना सकते हैं अगर हम टॉलरेंट होंगे, अगर हम अपना लोगों को एक्सेप्ट करेंगे. Next on page number 14, we discussed about disagreements. के causes of disagreements क्या हैं? We may have disagreements at personal, peer, household and neighborhood levels due to difference of opinions. ठीक है, इस वजह से जो है हमारे disagreements होते हैं क्योंकि हमारी difference of opinion होती है. Difference between peace and conflict, their meanings and how they are connected. ठीक है, we also discussed about peace और कॉन्फ्लिक्ट और कैसे ये आपस में कनेक्टेड हैं, पीस कैसे मेंटेन किया जाता है और कौन सी चीज़ें हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा करती हैं. इनटॉलरेंट बिहेवियर्स आर द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, अगर आपका बिहेवियर उसमें टॉलरेंस नहीं होगी, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, सो देन कहीं पे भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है. Next, we moved towards page number 15, and we discussed about we can resolve conflicts through dialogue, discussion, listening patiently, and with the help of mediator. ठीक है, हमने conflict को resolve करने के लिए
if you have a disagreement or conflict, तो हम उनको कैसे resolve कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था कि अगर हम बात करें, we sit and talk, अगर हमारा discussion करें, हम एक दूसरे को patiently सुने, तो we can resolve our conflicts. Still, if your conflict is not resolving, you cannot find the solution, then you can call a mediator who can sit and talk to both the parties and then find a solution to resolve the conflict. From here, we will move forward towards page number 16, जहाँ पे हमने common etiquettes के बारे में पढ़ा था. Common etiquettes should be observed by everyone to make a better society. ठीक है? Common का मतलब है ऐसी चीज जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए. So common etiquettes जो हैं, they must be followed by every person so that we can make our society a better place. From here, we will move forward towards your evaluation. ये आपकी assessment sheet है. This will be provided to you by your teacher in print form. क्योंकि अब हम बहुत सारी चीजें citizenship के बारे में पढ़ चुके हैं. Now you can easily solve this worksheet. So first question is, how can you be a digital citizen? सबसे पहले carefully think कि what is a digital citizen. So how can you be a digital citizen? Then next, अगर आपने कोई story पढ़ी है and you like it and want to share it with your class fellows, but you cannot go to school because of vacation, what will you do? What will you know? Will you do know now? What are your rights and responsibilities as a students? ठीक है, अपनी rights और responsibilities लिखें as a students. List the key characteristics of diverse groups present within your school. आपके ग्रुप में कैसे डाइवर्सिटी पाई जाती है, आपको उन ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर लिखना है. ठीक है. Then list 5 common etiquettes that you practice daily. आपके अंदर कौन कौन से 5 etiquettes हैं जो कि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, कौन से गुड मैनर्स को आप डेली फॉलो करते हैं, आपने उसके बारे में लिखना है. You can also take some help from your teacher around you or your parents around you. You can pause the video and you can solve this worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Your teacher will grade you or give you marks for this worksheet. So my dear students, I hope you have learned a lot of things from this unit. Keep everybody around you safe and practice good etiquettes and good manners daily in your life. Have a good day and Allah Hafiz.